हिटविकेट बाय रैंपस में आप सबको वेलकम करते हैं। और जैसे भाई ने वादा किया था कि हमारे साथ होंगी नन अदर देन हिजाब जाहिद द जीएम ऑफ मुल्तान सुल्तान्स। हिजाब की जर्नी सबको पता है, जिनको नहीं पता चलो भाई बताता है कि शी स्टार्टेड हर करियर इन ब्रॉडकास्टिंग। कमेंट्री से स्टार्ट किया था 2 साल पहले, और उसके बाद फिर एक पीजीए लाइक जिसमें गवादर शार्क्स को शी वाज मैनेजिंग। उसके बाद फिर शी इज वर्किंग विद करंटली विद जीआरसी ग्रास रूट्स क्रिकेट, जहाँ पे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं। और वहां से फिर मुल्तान सुल्तान। सो मैं टाइम ज़ाया किए बगैर हिजाब से पहला सवाल करता हूँ कि यू स्टार्टेड योर करियर एज ब्रॉडकास्टर, एज कमेंटेटर, और अब मोहम्मद रिजवान, अली तरीन और उनकी फ्रेंचाइज को मैनेज करना, मतलब सरियल नहीं लग रहा कि 1 मिनट के लिए होता नहीं यार, बहुत आगे आ गई है। First of all, thank you for having me, Ramis. As promised, आपको मैंने promise किया था that I'll definitely come on your show and talk about the experience, inshallah, once we're through. हाँ, बिल्कुल surreal लगता है. I think I have a moment of realization every single day where I feel like, yes, I've come really far, alhamdulillah, and I can just be humbled by the fact and, just be thankful to Almighty Allah and of course the people I'm surrounded by, जिनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ, जिनकी मेंटरशिप की वजह से, जिनकी हेल्प की वजह से और गाइडेंस की वजह से ये चीज पॉसिबल हुई. तो या it does feel surreal, I think, every day since it has happened, I guess. थोड़ा सा जरा ये सीरियस तो नहीं कहूंगा, बट ये क्वेश्चन है जो मैं बहुत टाइम से माइंड में था जब से यू जॉइन मुल्तान सुल्तान, कि यू आर फिलिंग द शूज ऑफ हैदर अजहर, जिन्होंने मुल्तान को लाइक एक बहुत टाइम सर्व किया कि यार एक पूरी टीम बना के सारा सेट। तो एक प्रेशर नहीं फील हुआ कि यार एक कितना बड़ा शूज फिल करना, फिर इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को मैनेज करना? और ठीक है टूर्नामेंट वेल अल्हम्दुलिल्लाह टच वुड, ठीक है ट्रॉफी नहीं, बट सो फार सो गुड, सबको ये था फेवरेट्स हैं। बट उस चीज को फिलअप करना, हर चीज देखना, फ्रॉम स्पॉन्सरशिप्स टू एवरीथिंग, उस चीज को फिर कैसे आपने यूटिलाइज किया एज, क्योंकि आपकी फील्ड भी आई थिंक मैनेजेरियल रिलेटेड ज्यादा रही है अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, सो उस चीज को फिर कैसे कोप किया सारा? Yeah, I think it wouldn't be wrong to say कि pressure नहीं था. Pressure तो definitely था. It's a team that has done exceptionally well. Hyder Bhai has done exceptionally well with Multan Sultans in the past as well. और मतलब pressure हमेशा होता है एक ऐसी टीम का जो इतनी successful रही हुई हो, and then you're taking things over, and there's always a chance that you'll mess things up. But I think उसमें ये था कि the first priority I had was when I came in was to basically build a team. I'm not talking about the players, I'm actually talking about the people who work behind the scenes as well in a franchise. Because it's not just about managing 20 players or 15 players. It's wo aapne kaha ki there are so many different aspects to it, and there are so many different things that you have to look after basically all the time. There are so many different elements. So my focus was always, and initially was always on the fact that I want to surround myself, that by the time PSL comes on, I want to be surrounded with people who have who have experiences in this league or in other franchise leagues around the world, that they can share with me, and they can let me know. They should be experts on their field as well. And wo ek, it as a good manager, I think wo ek, you have to build that relationship of trust as well with them, when you let them know कि भाई देखो, this is your field, you're the expert of it, and you're the one who can basically pull this off. Yes, I can share the vision. Yes, I can let them know what the franchise wants from them or anything. But once you've built a team, you let them work. You give them the freedom, you give them the creativity, you give them the space to do what they want to do with it, and then execute your vision in their own way. Like you can't just hold their hands or micromanage them and just say कि नहीं भाई, जो मैं चाह रही हूँ या जो मैं करना चाह रही हूँ वो मेरी तरह से होगा, मेरे तरीके से होगा. I think that's something that was very important to me initially. So उसके अंदर, that's basically all I've done. I would say, built a team, surrounded myself with people who I think have done exceptionally well in their own fields, and then gave them the opportunity to execute the vision in their own way. नहीं बिल्कुल ये चीज नजर आई जो फॉर मी, जो मुझे फील हुई कि हाँ एक विजन और एक आइडेंटिटी जो हम मुल्तान की देखते रहे, वो म्यूजिक वीडियो थी, वो म्यूजिक वीडियो से ही नजर आई। मतलब उसमें आपकी पूरी टीम ऑब्वियसली आहद, अली, अली द चैंपियन, और जो लाइक शूट कर रहे थे विजुअल प्रोफेसी की टीम, आई नो देम एवरीवन, सो वो एक आपको नजर आई। मुल्तान को जब आप स्टार्ट किया है ड्राफ्ट से, अगर हम स्टार्ट करें तो बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे मेरे समेत के लाइक काइल मेन्स आप लोगों की फर्स्ट पिक होगी, बट यू पिक्ड आई थिंक डेविड विली,
जो कि एक Yeah. मतलब क्योंकि डेविड विली का हमेशा से रहा तो है मुल्तान के साथ, बट Yeah. डोंट यू थिंक कि मुल्तान को एक टॉप ऑर्डर पे प्लेयर भी चाहिए था, क्योंकि रेजा हेंड्रिक्स आया बट वो फॉर 7 और 8 मैचेस, वो चीज आपको काइल मेल्स भी फिलअप करके दे सकता था, बिकॉज ही कैन बोल सम गुड स्पेल्स, और बैटिंग में भी वो टॉप ऑर्डर में भी कैन, वी नो ही कैन अनलीश एवरीथिंग। सो ये मेरा बस एक। देखिए दो चीजें थी. It was there were two big I think positions that we wanted to fill. First हम चाहते थे कि हमारे पास बॉलर एक ऐसा है जो कि पावर प्ले और डेथ में हमें he can lead the team. I think that was one of the spots that we wanted to fill up, and the other one was like you said, a top order batter that we wanted. एक ऐसा batter who can take the game away from you on the given day. So I think ये दो था, and it was 50-50 as to who we wanted to pick first. Obviously there was a lot of homework that went into it, and we just felt like at the time we just felt like okay, David Willey is a pick that if we don't pick him first, we might not be able to get a second chance to pick him. But any other player that we wanted to pick, we might be able to get them in the second round or the third round. Up you go round by round, turn by turn. So you have to wait for the other teams to make their choices, and then you get to choose another one. So I think उस हिसाब से we built a we built a decision tree, aap keh lo, ke how it could go either way, if we pick this one first and, second one. And as far as, picking Kyle Mayers and other players are concerned, तो उसमें बहुत सारी चीजें, factor in करती हैं. Availability player की, if they're available for the full season or not. Also their track record against, most of the bowling attack that they're going to face here, and their weaknesses, so obviously हम देख रहे थे तो इसका मतलब है कि बाकी टीमें भी देख रही होंगी. So that's our assumption as well. So वो उन चीजों को रखते हुए we felt like कि जो हमारी पहली pick है, it should definitely be somebody जो कि हमारी bowling में stability लेके आए और consistency लेके आए. And I think David really did that exceptionally well. So no regrets there. ओह एब्सोल्युटली, मतलब बहुत सारे मैचेस उसने सेव करके दिए अपने, और इवन एज अ वाइस कैप्टन ही गेव दी एक्सपीरियंस और शेयर किया अपना सारा एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ कि कैसे करना। और मेरे लिए तो सबसे बड़ी पिक जो थी वो थी डेजी अली मोहम्मद अली को, जो आप लोगों ने एक स्पेशल पिक किया, और मतलब ही परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल, और उसका रिजल्ट हमें नजर आ रहा है कि ही माइट बी पिक फॉर पाकिस्तान टीम एंड ही गेट द अपॉर्चुनिटी टू प्ले एज वेल। मेरा अब अपकमिंग जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक चीज चेंज किया मुल्तान सुल्तान ने, एक टैबू चेंज किया है कि फीमेल कोचेस, बहुत लोग इस पे क्रिटिसाइज कर रहे थे, टू बी ऑनेस्ट बहुत लोग इस पे बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे कि ये है वो है, हमारे यहाँ एक चीज बड़ी फजूल किस्म की शुरू हो जाती है। एलेक्सा हार्टली और कैथरीन डाल्टन को लेके आना, फिर आप भी मैनेज कर रहे, तो एक वो बात शुरू होगी कि यार ये मतलब ये इतना ये जरा जा रही है। लेकिन इस चीज को कैसे कोप किया एज मैनेजर, क्योंकि अब आपने हायरिंग तो कर ली है विद कंसल्टेशन ऑफ अली तरीन एंड ऑल दी मैनेजरियल स्टाफ, सर अब्दुल रहमान है, वो वसीम थे बिल्कुल आपके साथ, तो उस चीज को फिर मैनेज कैसे किया, और उस चीज का वो हमें रिजल्ट भी नजर आया कि उसामा मीर की बॉलिंग थी या वो डेजी की बॉलिंग थी, वो कैसे उस चीज को आप देखते हो? देखिए सबसे पहली तो बात ये है कि both the female coaches were they're professionals. पहली बात ये. और जब आप एक ऐसे प्रोफेशनल environment में होते हो ना, I think that's something that we need to change here. मतलब यहाँ पे हमें इस चीज को चेंज करने की जरूरत है कि जब आप प्रोफेशनल environment में होते हो, आप देखते हो कि बंदे की काबिलियत क्या है, आप ये नहीं देखते कि उसका जेंडर क्या है. So yes, there were, ऐसा नहीं था कि challenges नहीं थे, like you said, कि काफी, there was a backlash as well, and it's something very different, something that hasn't been done before, and history आपको ये बताती है, whenever you try to do something new, you always get, mixed reviews. There will be some people who will support the idea, but there will be some people who will be against it, and that's fine. But I think हमारी जो priority थी वो ये थी कि हमने टीम को सक्सेसफुल बनाना है. It's not something that we did for anything else but to make the team successful. So like you said yourself, you had the results in front of you. They did exceptionally well. They did every part of their job perfectly. They executed it perfectly. They planned it perfectly. And my job was to make it all easier for them. And I think in sync, अगर मैं देखूं तो I think we were all able to work together really really well. And I think इसमें credit जो है वो हमारी जो बाकी टीम है, हमारे हेड कोच हैं, हमारे बाकी कोचेस हैं, मोहम्मद वसीम हैं, इवन आई बहुत हद तक जो है वो सपोर्ट जो है वो हमें हमारे प्लेयर्स से भी मिली है. दे वर वेरी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स देम एंड दे ट्रीटेड देम लाइक जो अथॉरिटी कोच को देनी चाहिए, दैट्स एग्जैक्टली हाउ दे ट्रीटेड देम. हमारे जो कप्तान हैं, दे वैल्यूड देयर ओपिनियन अ लॉट. तो इन सारी की सारी चीजों को जब हमने देखा ना, व्हेन दे वर ऑल इन द रूम टुगेदर, it just made sense, it worked out. So I think आप कह सकते हैं कि
yes, there were, you know, a few questions raised before the PSL started, but once it started, it became a normal thing for us. So we didn't feel like कि यहाँ पे कोई ऐसा element है which is, you know, out of place. So it's just not, there's a missing part of the puzzle or anything like that. It's just, it made sense, you know, it was a whole team and they were all together. बेसिकली जो पूछने का था मकसद वो यही था कि क्योंकि एक हमारे यहाँ ना वो एक चीज बड़ी होती है कि जब तक जैसे आपने खुद आंसर कर दिया कि कुछ नया एक्सपेरिमेंट करो तो लोग होते हैं ये कैसे होगा, ये क्यों होगा, ये क्यों, वो कुछ बगैर कुछ पता किए कि अच्छा क्या। और क्योंकि मुल्तान का एक ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा रहा कि वो कोई भी चीज ऐसे नहीं करते, एक पीछे प्लानिंग जरूर हमें नजर आती है। मतलब आज से नहीं है, लाइक 3 to 4 years जब से हम मुल्तान सुल्तान की देख रहे हैं, जब से फ्रेंचाइज हुई है, तो वो चीज हमें नजर आई है। सबसे बड़ी पिक जो मुझे वैसे मुझे लगता है मुल्तान ने जान के की थी, वो कोयटा से जो इफ्ती मिनिया उठाया था। वो क्या था सीन, मतलब और इफ्ती मिनिया ने भी प्रूव भी किया, मतलब हर मैच में, मैच 1 से लेके लास्ट मैच तक वो इफ्ती मिनिया कुछ और ही था। वो इफ्ती मिनिया मतलब वाकई इफ्ती मिनिया था। तो उस पे क्या पहले से ही तैयार थे कि यार ये करना ही करना है? यार, आई थिंक उसमें, you know, I will take a little bit of credit in that क्योंकि क्योंकि जब हमने टीम बनानी थी और when we got to know कि some of our foreign players who've been part of, you know, Multan Sultans for a few years are not available this year, so we went out looking for their replacements. And you know, हमारा हमेशा से ही ये view रहा था कि if we can find somebody who's a local player and he can become, you know, a core player for us in the long run, क्योंकि foreign players का ये होता है, sometimes they'll be available for PSL, sometimes they won't be, and that damages your team for that particular season. So we wanted कि अगर हमें replacement, you know, एक local player की शक्ल में मिल जाए, we get a power hitter who can, you know, do this kind of you do this kind of stuff for you and can be a part of the team long term, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होती. And I think अगर कोई भी क्रिकेट फैन से आप पूछ रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, the only person that comes to your mind is basically Iftikhar. So we fought we fought many battles to bring him over, but I think obviously definitely thankful to Koita कि उन्होंने जो है वो, you know, they did the swap with us. And I think we got you know, a lot of backlash for this as well, since the person that we swapped, the player that we swapped for Ifti was none other than Riley, and he's been an integral part of Multan Sultan. So yeah, that was you know, उस पे काफी बातें भी सुननी पड़ी थी और सारा कुछ था, बट सी बीइंग the कोयटा thing is फैन ना, बीइंग कोयटा फैन, क्योंकि मैं कोयटा का फैन, और मतलब मेरे लिए 4 साल बड़े मुश्किल थे क्योंकि रायले को जब दिया तो दिल खून के आंसू होता था। बट जब गया ना तो मेरी मिक्स फीलिंग थी कि अच्छा इफ्ती मिनिया वहां गया है जहाँ वो डिजर्व करता था, जिन लोगों के पास गया है। मतलब आई मीन आई सॉ यू एंड आहत कि यार इफ्ती इफ्ती मिनिया इफ्ती मिनिया इफ्ती मिनिया। मैं कहा यार हाँ ये ठीक है, स्वैपिंग विद रायले। मैं कहा यार हाँ चलो हमारे पास कोई प्लेयर आया है। Look, if we look at it, we got like two players in return for Riley, which was Ifti, and then obviously we got our first pick, which was David Vili, and I think they both proved to be match winners for us in every single game. So we couldn't have asked for a better result of, you know, for this trade. To matlab, I think it all worked out in the end for us, and I think jahan tak baat hai Ifti ki, I think this has been his best performance in PSL so far in the last, you know, few years that he's been part of PSL. And to watch him at that peak is, you know, it's just so much entertainment, so much fun. And you can like you every day you just, you know, realize कि उसकी ceiling बहुत high है, you know, in every term. He's super fit, he is super dedicated, he has tunnel vision when it comes to cricket, you know, but he's also at the same time, he's one of the most funniest and kindest people that you'll meet. So it was really fun to have him, you know, in Multan Sultan's camp this year, and I think उन्होंने definitely चार चांद लगाए हैं on the field and off the field as well. आई थिंक वो ह्यूमर साइड तो मुल्तान सुल्तान के डिजिटल कंटेंट से भी बहुत नजर आ रही थी। जो रील्स हम देखते थे वो मतलब एक अच्छा एक गो टू मेरा एंटरटेनमेंट होता था पीएसएल के टाइम में। अच्छा मुल्तान की रील्स में अब क्या आ रहा है, कंटेंट क्या निकाला है। सो वो चीज भी हमें नजर आई। पूरे इस एनवायरनमेंट को जब लाइक क्योंकि डिफरेंट प्लेयर हैं, डिफरेंट माइंडसेट्स होते हैं। रिजवान का डिफरेंट है, रायले सॉरी रेजा हेंड्रिक्स का, डेविड विली का, उसामा मीर का, बहुत से ऐसे प्लेयर्स भी थे जिन पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी था कि खुश दिल क्यों है, ये प्लेयर क्यों है, एहसानुल्लाह को लेके बहुत ज्यादा लोगों के रहते थे। इस चीज को फिर एक ड्रेसिंग रूम को, एक इन्वायरमेंट को, एक जगह को फिर मैनेज करना बीइंग जीएम, वो कैसा मतलब एक टफ होता था एट टाइम्स कि यार बहुत ज्यादा हो रहा है, कि यार इतना नहीं, मतलब वही चीज आती थी फील।
देखिए difficult तो है, like you said, every single person who's part of the team has their baggage और वो उनके साथ आता है, and then you have to basically make sure that nothing interrupts with the game itself, क्योंकि at the end of the day आपका goal ये है to have to win the trophy. So anything that comes up, you know, that's not that could potentially affect their game or could come in between, you know, the success that you're aiming for. You have to manage it as a manager. But I think इसमें मैं बहुत ज़्यादा credit दूंगी हमारे coaches को भी, जो हमारे local coaches थे, and also our team manager एस नागी को भी, क्योंकि जहां तक बात थी dressing room चलाने की और dugout चलाने की, वहां पे they were the people who basically did most of the work. ठीक है, हाँ ठीक है, मतलब obviously I'm the GM and I look after everything and everyone, but I think उस level के ऊपर, you know, individual instances के ऊपर, and to give that kind of attention and love and care to every single player, तो उसमें I think आपके team manager का भी बहुत role है, और उसमें मैं बहुत credit दूंगी एसन को. He was doing it for the very first time, but I think he did a tremendous job as far as being the communicator and being the one who took care of them every day when, you know, when he was needed. So I think that was yahan pe, obviously I can't take all the credit because I didn't do all the work. I just made sure that we have the right kind of people to do the right kind of thing. वो बिल्कुल नजर आया ना कि फॉर एग्जांपल यू टॉक्ड अबाउट एसन, ही वाज मैनेजिंग फर्स्ट टाइम एक पूरी टीम को, डग आउट को. इवन अगर हम मीडिया में बात करें, बहुत लोग अपना एक परसेप्शन रखते हैं कि नहीं, इस तरह ऑनेस्टली एक बात कर रहा हूँ कि नहीं टाइम देते. बट मुल्तान सुल्तान का मीडिया एज फार आई कंसर्न कि हमेशा एक रिस्पॉन्सिव है, वेदर इट्स एसन वेदर अली. अली भी फर्स्ट टाइम ही वाज मैनेजिंग मीडिया, तो एक आपको एक नजर Yeah, आएगा. Ali Noor was doing our media management for the very first time, यस, and I think एंड he did a really मेजोरिटी good ऑफ द job. जर्नलिस्ट सेड कि यार ये मतलब बड़ा डिफरेंट था और अच्छा कर रहे हैं. वो एक चीज बड़ी अच्छी लगती है यार. चलो कोई एक होता है ना कि यार एंटाइटलमेंट आप भी कहीं ना कहीं लेते हो यार, कोई आप जानते हो तो आप कहते हो हाँ ये सही, ये गुड सीन है. थोड़ा सा एक मेरा क्वेश्चन अब इस बात है कि 3 फाइनल मुल्तान खेला, लेकिन एक कुछ कहते हैं ना कि के बिल्कुल फिनिशिंग लाइन नहीं क्रॉस हो रही. मतलब एक दफा Yeah. नहीं, 2 दफा नहीं, ये थर्ड टाइम. और पर्सनली अगर मेरे से अगर आप पूछो तो आई फेल्ट कि मुल्तान ने थोड़ी सी कुछ गलतियां की, जो आई फेल्ट टॉस जीत के पहले बैटिंग, मतलब आप कर रहे हो लाइक, मतलब आप पहले उनको बैटिंग नहीं दे रहे, यू बैटेड फर्स्ट. वो एक प्रेशर हमें शुरू में फील नजर आया, रिजवान के इतना शॉट थे, फिर डेविड विली को वन डाउन करना, वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, आई गेट इट. बट एक सेटल्ड कॉम्बिनेशन छेड़ना, डोंट यू थिंक वो थोड़ा ज्यादा हो गया था? देखिए वही वाली बात है कि सिंस अगर आप इट्स इन हाइंडसाइट व्हेन यू लुक एट इट, सिंस द गेम वेंट टू द वेरी लास्ट बॉल, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यू नो पिक के भाई आपने व्हाट डिड यू डू राइट एंड व्हाट डिड यू डू रॉन्ग. अ लॉट ऑफ थिंग्स आई थिंक वर्कड आउट. A lot of the changes that we made worked out, but I think a few of them did not. But since you know game आपकी एक गेम इस लेवल की है कि वो दोनों टीमें जो हैं they're fighting till the very last ball, I think उसके अंदर it would be difficult to comment कि भाई हाँ this is something that we did wrong and this is something that we did right. Yes, there were a few different things that we tried, but we tried that because we've played the same opposition twice before, and we just knew के what can we do to give us the edge. Sometimes you know things get executed well, sometimes they just don't. So I think that was one of those days. Unfortunately, the final was one of those days where it didn't come off. We didn't have any trouble, you know, with our batting lineup until the day of the final. So I think that was a bit of a bad luck as well. But yeah, I think definitely was it stings a lot when you're not able to, you know, get your hands on a trophy that you worked so 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 eagerly for. But I guess uske andar, since it's my first season, I think I there was a lot of like dukh bahut tha कि weren't able to get that trophy. But when I looked at Mohammad Rizwan, I was like, you've played it 3 times and you've lost 3 finals. How are you still smiling and how are you still standing? And just to see him and his unreal belief that he has, you know, in the team and himself, I guess it made everything a lot better. You know, it's just like you see a guy who's just not willing to give up no matter what. And you know it's easy to get disheartened for even for fans and even for players, you know, कि हम 3 साल से 3 finals खेले, we're just not able to win, we're just, you know, fuck it, we're not, you know, it's just not happening, can't do this anymore. It's easy to get disheartened, but it's very difficult to pick yourself up and then pick the whole team up, and I think that's what he did. And I think I have like so much respect and admiration for him because that's the kind of leader that he is. So yeah, I think we could definitely do things better, and inshallah we will in the future. It's all a learning curve for a lot of us who are here for the first time, and also for some of our veterans as well.
Basically, what I felt कि it's your first time you came to the final, which is the big thing for you and the other. But fans के लिए ना वो है कि यार हम तीसरी दफा आए हैं और इतना क्लोज आके इतना लाइक जो लास्ट टू फाइनल थे वो तो लास्ट लास्ट बॉल पे गए हैं ना कि लाइक एक रन पहले एक रन से आप रह गए फिर लास्ट बॉल पे एक रन पे एक बॉल पे एक रन चाहिए वो एक फैंस के लिए क्योंकि अभी भी मेरी फैंस है जो मुल्तान के वो अभी तक वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे वो अभी तक शेल शॉक्ड है So when I shared the post कि आपने आना है and want people shared me कि यार हम बात ही नहीं कर पा रहे फाइनल की हम क्या बात करें तो मैं कहा यार टेंशन ना लो No, वो तुम see, लोगों से ज्यादा होंगे the thing is that it's okay. I think I understand wo jo dard hai as a fan because I've been a fan myself for so many years. And I understand ki, sometimes you just like, you want to flip the table. You're just like, I don't care about this game anymore. My team never wins and stuff like that. But that's why I'm saying ki it's easy to get disheartened. It's very difficult to pick yourself up and try again and again every year. And that's what the team is doing. And I think I have so much admiration for them for that. Ki wo har saal aate hain, they give their best. Yes, they're not able to get that second trophy right now. But I think with the way that Rizwan is leading and with the way that the franchise with the direction that franchise is going in, I'm pretty satisfied. Ki inshallah we will get our hands on that trophy very soon. मेरे से पूछेंगे तो मैं तो ये कहूंगी कि next year inshallah. But but yeah, I mean, देखें ये सारी बातें होती है T20 क्रिकेट है it's the team who does better on the day they win simple सी बात है you could be the favorites you could be the team that everybody is has declared winners midway through the tournament but if you're not good on that particular day you're not going to be able to win so I think we just weren't that good on that particular day as we were previously in the tournament. So call it jitters, call it, final ka pressure, whatever you want to call it. In hindsight, you can say a lot of stuff because we didn't win. But yeah, there are many, many layers and many factors to it. You talked about being fan since joining Multan Sultan उससे पहले आप full die hard हमें पता hardcore Islamabad United fan you were Yeah. playing Nobody's forgetting that. two facing them in two biggest matches of PSL एक तो final and before that I was in Pindi when the 2-8 that match happened the biggest chase second biggest chase मतलब वो Yeah. क्राउड ही इलेक्ट्रीफाइंग था वो बीइंग इस्लामाबादी एंड नाउ यू वर्किंग विद मुल्तान तो वो कैसी वो फीलिंग्स थी क्योंकि लास्ट बॉल तक वो मैच भी गया वेयर मैडी हैदर अली फिनिश्ड और बहुत जबरदस्त हो वन ऑफ द फेवरेट मैचेस मेरा वो कैसी फीलिंग्स थी उस वक्त यार देखो the thing is कि now that I'm with Multan, I'm 100% with Multan. I can't like my loyalties will always be with the team that I'm working with, the team that I've built. But obviously since I've been a very, very long-term fan of Islamabad United and everything, so I feel I feel good about the fact that they won, and I feel good about the individuals in that team, that I've worked with. I'm really extremely happy for Rehan Bhai because he's been a mentor. He's been somebody that I've मुझे को problem होती थी, I run to Rehan bhai, ठीक है? So that's basically the kind of relationship I've had with him. So, and I know what this trophy meant for him, and I know what this trophy means for the team as well. I know what it meant for Shadab. I worked with Shadab. I know it worked, with for some of the other players. I know what it meant for Azam, and it's since I worked with them as well. So I knew a part of me was extremely happy for them as well. But obviously, my team couldn't win it, so wo dukh bhi tha, which was overwhelming at the time. But to be fair, I think they did a very good job of building the team even before the PSL started. And I think a lot of other teams, can learn from those particular things that they have done even before the PSL started. I mean, वही वाली बात है that you can do everything right, but on the day, if you're not playing well and if your team is not doing well, you can lose. So I think we did a lot of stuff right, but I think on the day that it mattered the most, we just felt a little bit short. But I'm but extremely happy for them, extremely happy for the 4 United fans as well, other than me. So congratulations to them and everybody who was involved, and I think they worked really hard. Yeah. बस दो तीन क्वेश्चन है छोटे छोटे से लेकिन थोड़े से जरा हैं फर्स्टली व्हाट्स वो मेरा फेवरेट मैच कौन सा था एज मतलब पीएसएल अभी पूरा किया तो लाइक फेवरेट मैच मतलब फॉर मी इट वाज अगेन मैं रिपीट करूंगा वही पिंडी में जो इस्लामाबाद और मुल्तान का मैच था
बिकॉज इन दोनों टीम्स की ना मुझे राइवलरी एक, जैसे हम देयर वाज अ टाइम हम कोयटा पिशावर की देखते थे कि यार क्लोज मैचेस जाते हैं, लास्ट लास्ट बॉल और हाई स्कोरिंग मैचेस थे। लास्ट 2 सीजन से हम यही देख रहे हैं कि अच्छा ये लास्ट बॉल फिनिशेस हो रही हैं, मजा आ रहा है एक मैच का। सो व्हाट वाज योर फेवरेट मैच, और कैसा था वो, मतलब कौन सा फेवरेट मैच था आगे? Yeah, I think every match that we won was my favorite match. But I think एक ऐसा match definitely था which so I always have jitters before a game. I always, feel I don't care if it's the first game of the tournament or it's the final. I'm always nervous, about my team, and I'm always, reciting something कि बस आज जीत जाए. But I think one game that I felt very relaxed on, आप कह लो, या I had the belief कि भाई कुछ भी हो जाए we're winning this game, and I think that was the qualifier against Zalmi. I think that was the game that I felt from start to end we played an amazing game of cricket. I think in every aspect we were kind of perfect. And चाहे आप batting की बात कर लें, bowling की बात कर लें, I think that was one game that, and as somebody who's watching outside, having them play that kind of cricket, and watching that self-belief in all the players, कि यार we've got this, we're making it to the final. So I think that was pretty special to see. So that probably was my favorite game throughout the tournament. इट वाज वैसे कंप्लीट गेम, इट वाज लाइक ये सारे वो आपने अपने बॉक्स मार्क किए कि अच्छा बैटिंग भी सही जा रही है, बॉलिंग भी सही जा रही है। सो ठीक, परफेक्ट, बिकॉज क्योंकि जल्मी से लाइक राउंड मैचेस भी आप मुल्तान हार गया था, बड़े वो क्लोज Yeah, मैचेस that was another factor. The only team that थे। we've lost to, lost जल्मी। group games to, and you're facing them again in the qualifier. Pressure बिल्कुल था because it's the team you've lost to twice, and हम्म। then to overcome that and do it in a knockout game that was very special as well. Yeah. सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एहसानुल्लाह पे हम बड़ी आजकल सुन रहे हैं कि वो मुल्तान सुल्तान के ओनर अली तरीन का भी एक स्टेटमेंट भी है कि इंजरी उसकी, मतलब मिसहैप हो गया, वो सारा डायग्नोज ही गलत, ऑपरेट ही गलत हुआ, वो सारा एक इशू, फिर ही इज गोइंग टू इंग्लैंड आफ्टर ईद। एहसानुल्लाह को हम देख रहे हैं रिटेन होता हुआ आगे मुल्तान सुल्तान की तरफ से, क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट तो कर दिया मुल्तान ने, लाइक 2 सीजन से 3 सीजन से हम देख रहे हैं कि चल रहा है। 2022 से 23 भी साथ था, 24 भी साथ है, इवन दो ही डिडंट प्ले एनी गेम। तो आगे हम क्या एहसानुल्लाह को देखेंगे साथ? Yeah, देखो, that obviously वो एक full management का और ownership का decision है कि करते हैं नहीं करते, but as far as I can tell is कि the reason why इतनी कोशिश हो रही है to get him back on track, वो इसीलिए हो रही है because we see him as a very special player, and inshallah not just for Multan, for Pakistan as well. And I think any player who's going through an injury and stuff like that, they should be a priority for everybody, क्योंकि वो, I think I've seen it up close now. I think it's a very difficult time for the player himself. चाहे वो कोई भी player हो, I think उनके लिए एक injured player होना और dugout में बैठना बहुत मुश्किल होता है emotionally, mentally it takes a toll on you, and I've seen that happen. So I think I'm hoping and wishing and praying that he gets the treatment that he needs, and we see him back in action soon, inshallah. And I think Multan believes that he's a very, very extremely talented bowler, and Allah kare when he's back to full health, and we'll be able to see him back in Multan colors and hopefully in Pakistan colors as well. इंशाल्लाह, क्योंकि वो तो है भी बहुत बड़ा एसेट पाकिस्तान के लिए। हमें लास्ट क्वेश्चन इजाज, मुल्तान सुल्तान का अब आगे फर्दर प्लान किया है? बिकॉज वी हैव सीन कि यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा चांसेस है, एलीट स्क्वाड अभी मैं देख रहा था कि रमज़ान टूर्नामेंट भी खेलता है, वो पूरी उनकी उन पर वर्किंग होती है, उन पर इन्वेस्ट किया जाता है, उनको स्टाइपेंड्स भी देता है फ्रेंचाइज आपकी, सारा वो करती है इन्वेस्ट, और हमने देखा है पूरा एक स्ट्रक्चर है। और हमने उससे देखा कि प्लेयर्स बहुत सारे यंगस्टर्स आगे भी आए हैं, इस सीजन फैसल अकरम आए, उससे पहले आमिर अजमत, इस तरह हमने बहुत सारे प्लेयर्स को देखा है कि मुल्तान सुल्तान एक प्लेटफॉर्म देता है और फिर सेफ गार्ड भी करता है कि ये हमने इन्वेस्ट किया, यही हमारा टैलेंट और ये आगे जाएगा। हम आगे भी फर्दर कंटिन्यू प्लान देख रहे हैं, और इन प्लान्स में क्या हम देख रहे हैं कि सिर्फ T20 क्रिकेट पे ही फोकस होगा, या हम बाकी भी मतलब फॉर्मेट्स को भी साथ साथ मुल्तान ये एलीट स्क्वाड को तैयार किया जाएगा? Yeah, it's not a format specific जो भी काम grassroots level पे अली कर रहे हैं और मुल्तान सुल्तान कर रही है इस टाइम पे. It's not format specific or anything. It's about giving platforms to the players. और वही वाली बात है कि हम you know I think अगर आप देखा जाए तो बचपन में everybody wanted to be a cricketer. So मतलब आपके पास बहुत competition होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन बहुत केसेस में ये होता है कि देयर आर नो रिसोर्सेज. आपके पास तो रिसोर्सेज नहीं है टू
play, आपके पास platform नहीं है to go represent, you know, a certain club or certain team and stuff like that. So हमारी कोशिश ये है कि वो platforms create किए जाएं throughout the country. और यही मतलब लॉन्ग टर्म हमारी प्लानिंग यही है, जिस तरह से यंगस्टर्स को ला ला के उन लोगों को चांसेस दिए गए हैं, यू नो, you've seen Sanullah, you've seen Abbas Afridi, you've seen Faisal Akram, you've seen so many other players, you've seen Dahani, you know, who've made their name and they started off from Multan Sultans. तो हम यही चाहेंगे कि जो भी हम टैलेंट आइडेंटिफाई करें इवेंचुअली वो मुल्तान सुल्तान्स को और इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है कि वो आपके प्लेटफॉर्म से निकल के आ रहे हैं। एंड आई थिंक at this time a lot of other franchises are doing that as well, which is जो जिसको आप जितना एडमायर करें उतना वो कम है। सो हमारी भी एक कोशिश है टू प्ले a small part in this, you know, कि अपनी क्रिकेट इंडस्ट्री को बेहतर करें, चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, स्ट्रीमलाइन करें और मेक श्योर करें कि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे वो लड़कियां हैं या लड़के हैं, उन दोनों को ना वो रिसोर्सेज और प्लेटफॉर्म जरूर दें टू शोकेस देयर टैलेंट। एंड देन ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन, यू नो, who comes forward. It depends कि वो उनका क्या talent है, क्या skill set है और सारी चीजें हैं, but we can definitely give them a platform to showcase those things and then obviously give them the resources to refine their skills और वो इंटरनेशनल लेवल के लिए उनको तैयार किया जाए। तो that's the thought process है इंशाल्लाह। मतलब ये हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, इसको हम डिफरेंट फेजेस में भी इंशाल्लाह एग्जीक्यूट करेंगे, एंड नॉट जस्ट फॉर मेंस क्रिकेट बट आल्सो फॉर वुमेन्स क्रिकेट एज वेल। वुमेन्स क्रिकेट पे ही मैंने बात करूँ बिकॉज आई हर्ड कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास फैसिलिटीज नहीं है बट दे आर ट्राइंग टू बी बेटर। और बहुत सी ऐसी मतलब स्टोरीज मुझे भी पता लगी थी कि यार कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो मतलब कमाल का एक्सेप्शनल टैलेंट है जो कि मेल टैलेंट को भी डोमिनेट कर रहा होता है एट टाइम्स। सो मैं तो बहुत ज्यादा होपफुल रहता हूँ जब मैं एलीट स्क्वाड या मुल्तान सुल्तान का कोई इनिशिएटिव देखता हूँ कि इयन पॉन्ड जैसे आए थे, कभी आते हैं, या कैथरीन डाल्टन, एलेक्सा हार्टली भी बीच में हमने देखा था कि आप विजिट करती हैं तरीन्स एकेडमी और इस तरह लीड स्क्वाड के साथ काम कर रही हैं। सो विशिंग यू गाइस अ लॉट ऑफ बेस्ट ऑफ लक और अल्लाह करे आपको ट्रॉफी आ जाए अगले साल। अब बहुत हो गया फैंस मतलब अब कह रहे हैं It's been a trophy drought मतलब for a अब तो while, so आप लोग तो मीम्स बना देते हो, अब आप लोग खुद मीम बन रहे हो। I mean, that's fine, you know, that's okay. क्योंकि देखो बात तो यही वाली है कि you have to pick yourself up and you have to try again. ट्रू। And there's always next year to do that, to make things better and to see कि वो जो, you know, whatever that 1% is that's left. But Rizwan says this very famously कि there's just 1% that's left. You've got the 99% right. There's just 1% left. What is that 1% and how we can make it better so we can get our hands on that trophy? Obviously, I think it took, you know, United a while to get things right as well from their last trophy. So there, you know, you learn and you experiment a lot of stuff in every single season, and hopefully, inshallah, we'll be able to हाँ get it बिल्कुल। right next. आई थिंक इस पे मुझे एक वो रेहान भाई बड़ा जबरदस्त कोट एक करते हैं, इधर यू विन इधर यू एक्सपीरियंस, देयर इज नो मतलब हाँ, लॉस कहीं नहीं exactly. है। I think तो आप उसमें भी exactly, एक्सपीरियंस ये गेन exactly. कर रहे हो कि 99 हो गया, बस 1% रह गया। सो That's 1% is left. So, वो जो 1% है, होपफुली inshallah, होपफुली hopefully 25 we'll विल be बी द able to मुल्तान conquer सुल्तान that ईयर। next year. होपफुली विल सी के मुल्तान सुल्तान के। थैंक यू सो मच। आप थोड़ा सा बता दो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा यहाँ। मतलब बहुत टाइम बाद हमने दोबारा शो किया है, ऑब्वियसली टच में रहते थे Yeah, लेकिन हो नहीं actually, पा रही I've थी। I've haven't done any shows or interviews since PSL ended because uh, I was actually busy in closing as well, and obviously I needed a little bit break as well. So Ramzan bhi chal raha tha, so I took a little bit of break. But yeah, it's great to, you know, talk about all of this stuff because there's so many memories that's coming to my mind right now, and so much stuff to talk and share, and so many stories. So I think everybody who was part of the team took a lot of memories and stories with them. So, you know, I did the same thing. So it was wonderful speaking to you. Obviously, it always is. And, you know, the kind of support that you have given me, you know, for the past couple of years since you've known me has been, it's always great to hear from you. So yeah, thank you so much for having me. यू सो मच हिजाब, इट ऑलवेज अ प्लेयर। और आगे भी इंशाल्लाह ताला विल टॉक अबाउट क्रिकेट। क्रिकेट ही है जो कनेक्ट कर रही है सबको। सो Please, थैंक यू सो मच। बाकी यार सब्सक्राइब वगैरह कर देना, जो दिल करता है कर दो। थैंक यू।